Hello and a warm welcome to South Asia Today, where we bring you in-depth insights into the key events shaping South Asia. I'm Akanksha Parimu and here are today's top stories. Nilgiri Hills, where India's finest tea takes root. NTT boosts ION development through OPT-QC quantum collaboration. And POGB rises as Pakistan's decades of oppression unravel. Let's begin the show. India is the world's second largest producer and exporter of tea, home to some of the finest varieties, Assam, Darjeeling and Nilgiri. Today we travel to the Nilgiris in Tamil Nadu, where misty hills of the Western Ghats cradle emerald tea gardens. With their cool climate and fragrant leaves, the slopes of Ooty, Kunnur and Kotagiri brew some of the world's most exquisite teas. In India, tea isn't just a drink, it's a way of life. Its aroma carries the warmth and tradition of everyday India, fueling a love that spans generations and continents. A global tea powerhouse, India ranks among the top 5 exporters, contributing nearly 10% of the world's supply. In 2024 alone, it shipped 250 million kilograms worth $776 million, mostly rich, flavorful black tea. From the bold brews of Assam and Darjeeling to the fragrant citrus-kissed teas of the Nilgiris, India's hills continue to enchant tea lovers across the world. Tea is the next beverage which is consumed after water. And the main economy of Nilgiris economy is only the tea. Because here in Nilgiris, we have got 1 lakh hectares of tea field is there. And almost 65,000 small tea growers are here in Nilgiris. And their main income is only through tea. Tea cultivation in the Nilgiris began around 1835 under British rule and soon flourished into one of the world's premier tea growing regions. Here, the rolling hills stay alive year-round with the rustle of tea leaves being plucked, a rhythm of life and livelihood. The Nilgiris produce both orthodox and CTC teas, each reflecting the region's cool climate and misty charm. In 2008, Nilgiri Orthodox tea earned the coveted GI tag, a mark of its distinctive flavor and global prestige. Here, if you see in Ooty, all the 120-130 factories, they only manufacture black tea. There are 2 types of teas, one is black tea and one is green tea. So here we manufacture only black tea. In black tea itself, there are 2 types of black teas. One is called CTC and one is called Orthodox. CTC stands for cutting, tiring and curling. So all the 140 factories, around 140 factories are manufacturing only CTC teas. And around 10 factories, they manufacture Orthodox teas. The factories which manufacture Orthodox teas are connected having their own estates. Grown at elevations of 1000 to 2500 meters, the Nilgiri Hills, home to pastoral Toda tribe, are famed for their lush tea gardens and fragrant brews. Nilgiri tea carries a hint of fruit and mint infused by the blue gum, eucalyptus and nearby plantations. Its perfect balance of flavor and body makes it a true blender's dream. Known as the Blue Mountains, the Nilgiris enjoy both southwest and northeast monsoons, allowing tea to be plucked year-round. The region's tea gardens and factories provide livelihoods to local tribes and communities. तो यहाँ पे मेनली बिजनेस देखे तो चाय पत्ती का तो है, तो उसके लिए यहाँ पे लोकल आदमी भी यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा चाय की खेती हो रही के लिए उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मालूम हो रही है उसका, जो टी तोड़ने के लिए जैसे वो वाला इंडस्ट्री में डालने के लिए लोकल आदमी भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके लिए उसका कमाई बहुत अच्छा लग रही है। दूसरा स्टेट से यहाँ पे आ रहे, उसके लिए यहाँ पे पिकनगर चाय पत्ती के वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं, जो सारे लोग को इसमें क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये फैक्ट्री में अब कम से कम 150 जने यहाँ पे काम कर रहे हैं। India's tea industry is thriving, fueled by initiatives like the Tea Development and Promotion Scheme, which is boosting quality, productivity and exports.
The scheme empowers small growers through FPOs, financial aid and organic certification while promoting value-added and packaged teas across the globe. From the misty Nilgiri plantations to teacups worldwide, India's tea story brews a perfect blend of tradition, livelihood and excellence, its fragrance carrying the legacy of one of the world's finest tea producers. NTT R&D Forum highlighted major progress in ion technology and its integration with quantum computing, announcing a collaboration with OptQC to advance optical quantum systems. NTT continues to drive innovation in ion, telecom, active noise control, and advanced sensor technologies. These developments aim to solve global challenges and enhance remote medical diagnosis by connecting doctors and patients more effectively through cutting-edge communication solutions. NTT R&D Forum shows progress of ion technology and its penetration into quantum computer. To complete it, NTT announced collaboration agreement with OptQC, a leading company in optical quantum computing. アイオン構想では、高電語デバイスを段階的に高度化し、ネットワークからコンピューターの中まで適用をしてまいります。2025年に始まった ION2.0 では、いよいよ高電語デバイスをコンピューターの内部に適用し始めました。ION3.0 では、パッケージから直接光配線で情報を伝達することにより、劇的な低消費電力を実現していきます。2032年頃に実現予定の ION4.0 では、いよいよパッケージ内部の配線も光化していきます。これにより最終的に電力消費100分の1を目指すということになります。NTT is researching and developing ion and quantum computing. It will solve various subjects all over the world. 現実の世界には大きな社会メリットがあるにもかかわらず、これまでの従来のコンピューターの計算処理能力の限界で実現が難しかったことが存在しています。量子コンピューターによって圧倒的に計算処理効率が向上することで、これらが実現可能となると期待されているわけです。NTT の量子分野への応用可能な光通信技術、それからオプト QC の光量子コンピューターの開発技術を組み合わせることで、スケーラブルで信頼性の高い世界トップレベルの光量子コンピューターの実現を目指してまいりたいと考えております。現在世界的な最新研究のレベルでも量子ビット数は数百からせいぜい数千であり、汎用利用に必要な100万から1億量子ビットの実現にはまだほど遠い状況でございます。NTT はオプト QC 社とともに光量子方式のスケーラブルな性質を生かし、2030年には世界トップレベルの100万量子ビットの達成を目指してまいりたいと考えています。In 2030, ion and optical quantum computers technology will show us the dawn of new communication and energy-saving era. NTT Inc. held R&D Forum with headword Ion and Quantum Leap. It is the biggest annual event to introduce latest technology contributing industrial progress. NTT is managing telecommunications service. Based on telephone service, NTT developed active noise control technology. 空間のですね、ノイズキャンセリングの技術を紹介したいと思います。でここではノイズが大きいんですけれども、この空間に入るとこのようにノイズが小さくなります。ノイズが届く前にどんなノイズかをある程度予測して、その反対の位相を出すことによってですね、ノイズを消す、空間を静かにする技術を使うことによって、その難聴リスクを下げることができます。NTT has cutting-edge sensor technology. It contributes to make doctors' diagnosis process more convenient. Distant patient and doctor are connected by this technology.
離れた病院と患者さんのご自宅を通信で結ぶことによって触覚、触診という、柔らかさの情報を、患者さんのご自宅で計測して病院側のお医者さんに送ることによって触診を実現するといった技術になります。患者さんの足を、このように押していただくことによって押し込んだ際の力と押し込み量からこの患者さんの患部の柔らかさを計測します。で、計測した柔らかさを今度病院側の方に送ることによってこちらと全く同じ柔らかさをこのデバイスに再現するといった技術を今回新しく開発いたしました。 Wireless laser technology of NTT is world top level. こちらはですね、レーザーを使った光無線給電技術を紹介しています。ビーム成形がオンになるとビームが広がりますので、太陽電池に均一にビームを照射することができてドローンが飛ぶというデモンストレーションになっています。離島被災地など電力ケーブルを引くことができないような場所にレーザーを使ってワイヤレスに離れた場所に電力を送るということを考えています。NTT R&D Forum is the showcase of cutting-edge technology to realize convenient and comfortable social life. It makes audience to envisage the symptom of industrial revolution. Now we take a look at some happenings in Asia in a segment called Asia Watch. Over 1.4 million people have been affected by the fallout of Cyclone Ditwa. UNICEF said this week after the deadly storm triggered widespread flooding and landslides, killing at least 410 people. Drone video released by UNICEF on Tuesday showed buildings and vehicles submerged in the flooded area surrounding the Kalani River in Kelaniya, near the Sri Lankan capital Colombo. Homes have been swept away and communities isolated, cutting off essential services such as water, healthcare, and schooling, UNICEF spokesperson Ricardo Pires said in Geneva, as hundreds of army and police personnel combed through regions hit by landslides to retrieve bodies. Deadly storms have swept across South and Southeast Asia in recent days, devastating large parts of Indonesia, Malaysia, and Thailand, and claiming hundreds of lives. Afghans who fled the Taliban and have waited years for a U.S. resettlement decision say their last path to safety has shut since Washington froze all Afghan immigration cases following a shooting near the White House. The U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS, said it had halted processing for Afghan nationals indefinitely, hours after an Afghan man shot and critically wounded 2 National Guard soldiers in Washington. President Donald Trump called the attack an act of terror and ordered a review of Afghans who entered the country during Joe Biden's presidency. For Afghans sheltering in Pakistan, tens of thousands of whom are awaiting U.S. resettlement decisions, the announcement felt like their last safe route had closed. 34 years old, Ahmad Samim Naimi, from Afghanistan's Panjshir province, who had worked as a TV presenter and press advisor under the previous U.S.-backed government, said he had already heard of 4 journalists disappearing when they were deported back to Afghanistan, and he feared for his own safety if he was forced to return. He fled to Pakistan after the Taliban began detaining journalists and former government workers, and had applied for resettlement in the United States. A spectacular and bittersweet natural phenomenon has transformed the landscape of Rio de Janeiro these days as rare Talipot palms flower for the first and only time before their inevitable death. The towering palms, which can reach heights of over 20 meters, take between 30 and 80 years to produce their singular bloom. Native to India and Sri Lanka, the species was introduced to Brazil in the 1960s by renowned landscape architect Roberto Burle Marx. The plant dies naturally about a year after flowering, marking the end of decades of slow growth. At the Botanical Garden, 3 Talipot specimens exist, but only 2 are currently in bloom. The third was planted just a year ago, meaning visitors won't witness this rare spectacle again at the site for several more decades. The last Talipot flowering there occurred in 2010. A larger cluster of palms at Otero do Flamengo Park has also begun blooming, though not all specimens are flowering simultaneously. Environmental conditions can affect the plant's maturation process.
For years, Pakistan occupied Gilgit-Baltistan has endured chronic neglect and poor governance. Residents face constant power cuts, inadequate medical services, and crumbling infrastructure. Meanwhile, security personnel are punished for carrying out their duties, even as extremist elements move about unchecked. These conditions expose decades of institutional failure, impacting both the people who live there and the forces responsible for keeping the region secure. Our report takes a closer look. For years, the residents of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan have endured severe hardships. Access to clean water, electricity, and healthcare remains limited. Ordinary citizens who raise concerns about resource management, education, and local governance face legal harassment and imprisonment. Meanwhile, those who engage in violent activities continue without accountability, exposing a stark imbalance between state protection for criminals and denial of rights to peaceful citizens. जब 78 सालों से रियासत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को बिजली नहीं दे सकते तो हमें एहतिजाज के अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। रियासत दहशतगर्दों को खुली छूट दिया हुआ है। रॉकेट लॉन्चर वालों पे कोई एफआईआर नहीं है, कोई शेड्यूल 4 नहीं है। लेकिन जो पानी की बात करता है, जो बिजली की बात करता है, जो तालीमी सहूलियात की बात करता है, जो मददियात पर कब्जे के खिलाफ बात करता है, जो जंगलात की हिफाजत की बात करता है, जो गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात की बात करता है, जो गिलगित बल्तिस्तान को आइंसाज असेंबली देने की बात करता है, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को या स्कर्दू वालों को अस्पताल में एमआरआई मशीन लाने की बात करता है, जो स्कर्दू को पीने के पानी का मुतालबा करता है, आप इस पर शेड्यूल 4 भी डाल देते हो, इन पर एटी भी डाल देते हो, उन्हें जेलों में बंद करते हो। The police force in POGB has also been targeted for demanding basic rights. Officers who raised concerns about their welfare and public safety are being dismissed or placed under Schedule 4. While criminals face no repercussions, law-abiding personnel face harassment. These actions reveal a pattern of suppression aimed at maintaining control and silencing anyone who challenges the status quo. हम गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस जवानों के साथ खड़े हैं। पुलिस जवानों ने हालिया दिनों अपने डीआरए के लिए गिलगित में एहतजाज किया था। सुनने में आया है 23 पुलिस जवानों को जो नौकरी से बर्खास्त किया गया है। मैं आईजीपी गिलगित बल्तिस्तान से यह कहना चाहता हूँ, आईजीपी यह पुलिस जवान तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का फर्ज है। अगर हमारे पुलिस नौजवानों को बर्खास्तगी वापस नहीं लिया गया तो हम पुलिस जवानों के हक में एहतजाज करेंगे। लेकिन खजाना लूटने वाले को, कातिलों को तो आजाद है, लेकिन हुकूक की बात करने वाले शेड्यूल 4 में है या जेलों में है। आज का जो एहतजाज है ये सिर्फ अलामती एहतजाज था, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जीने दिया जाए। हम जर्नलिस्ट नहीं मानते, हमने ये कभी नहीं कहा हमें गवर्नर लगाओ, हमने कभी ये नहीं कहा हमें निगरान वज़ीर आला लगाओ। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को भी इंसान समझा जाए और इंसानों वाला शुरू किया जाए। As POGB endures prolonged neglect, citizens and police alike face state repression for seeking fundamental rights. Power shortages, lack of health care, and restricted political freedom continue unabated. The growing unrest highlights the urgent need for accountability and systemic reforms as the people demand basic human dignity and the ability to live and work freely in their own land. In a major step towards safeguarding centuries-old heritage, a specialized workshop in Jammu and Kashmir brought together engineers and conservation professionals to bolster on-ground preservation work. Hosted by the Department of Archaeology and Monuments, the program highlighted advanced restoration methods, strategic site management, and capacity building measures
to ensure that conservation remains both sustainable and true to historical authenticity. The initiative represents a crucial move toward protecting the region's rich cultural legacy for future generations. Take a look. In a major initiative to protect India's heritage, Jammu and Kashmir hosted a specialized training and sensitization workshop for engineers and nodal officers involved in restoration projects. The program equipped participants with advanced skills in structural assessment, documentation, and conservation technologies, emphasizing the preservation of authenticity and stability. Through expert-led sessions and case studies from J&K and across India, attendees gained practical insights to tackle challenges in reviving forts, temples, shrines, mosques, and other historic monuments. आज का जो एक वर्कशॉप है, ट्रेनिंग कम सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है, ये हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो PWR&B डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं और जो नोडल ऑफिसर्स हैं ADDCs इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो कश्मीर डिवीज़न, उनको यहाँ पर हमने आज दावत दी है। और ये खुसूसन इसलिए कि हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्कीम फॉर रिवाइवल रेस्टोरेशन प्रिजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स इन J&K। तो वो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें हमारे बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, श्राइन्स हैं, टेम्पल्स हैं, मॉस्क है, चर्च है, बुद्धिस्ट साइट्स हैं, उनको हमने रिवाइव और रेस्टोर करना है। और इसमें हमने देखा कि जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो ये जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं इनको डिफ़िकल्टी आती है, एक तो नीड्स असेसमेंट प्लस हाउ टू अप्रोच ए साइट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इट्स DPR. The Heritage Workshop provided engineers and officers with critical insights on handling fragile and historically significant sites. Participants were sensitized to the importance of careful, non-invasive approaches, ensuring that development work does not compromise cultural integrity. They learned about suitable technologies, restoration methods, and the value of engaging expert consultants when preparing DPRs. The training reinforced that understanding these intricacies is essential to preserve the authenticity of heritage sites while carrying out any development or restoration activity. ये बेसिकली रीजन के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं, डेवलपमेंट वर्क्स के जो इंचार्ज होते हैं वगैरह, तो उनकी अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए था। बेसिकली ये हमारे इंजीनियर्स वगैरह जो डेवलपमेंट वर्क्स करते हैं यहाँ की आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे या हेरिटेज साइट्स पे, तो उनको थोड़ा बहुत सेंसिटाइज करने के लिए रिगार्डिंग हाउ टू अप्रोच दी साइट्स बिकॉज दे आर वेरी फ्रैजाइल एंड हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो what kind of technologies they can use, what kind of approaches, what kind of expert consultants they can hire in their teams when any kind of such work is proposed or DPR formulation is being done. Participants were urged to recognize the priceless value of the region's heritage, viewing historic sites as vital symbols of culture and identity rather than mere structures. Safeguarding monuments is not just about preservation, but about maintaining the legacy through which communities are remembered and respected. True heritage protection requires awareness, responsibility, and a lasting commitment for future generations. तो आज हम यहाँ पे वर्कशॉप पर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आए हैं जो कि प्रिजर्व करते हैं अपने हमारा जो हेरिटेज है उसको। बहुत सारे इंजीनियर, ताकि हम यहाँ पे अवेयर हो जाए हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम बहुत ही अवेयर हो गए अपने कल्चर और हेरिटेज के बारे में, क्योंकि अदरवाइज़ उतना भी अवेयर नहीं थे हम। हाँ, ये तो पता था कल्चर और हेरिटेज को मेंटेन करना है, लेकिन इतना अवेयर हो चुके हैं अब कि अब ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है कि मुझे तो अपने कल्चर और हेरिटेज को ज़रूरी प्रिजर्व करना है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ये आइडिया एक लाइक आइडेंटिटी कार्ड है हमारी ज़िंदगी का। जिस तरह हम पहचाने जाते हैं, जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाए तो वहाँ पर अगर हम पहचाने जाएंगे, हमारा जो कल्चर है ना उसी से हम पहचाने जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करें। The workshop highlights the J&K administration's commitment to sustainable development in Jammu and Kashmir by focusing on the preservation, restoration, and careful management of historic sites. Authorities are ensuring that cultural heritage remains central to the region's growth. The initiative reflects a broader vision where infrastructure, tourism, and community development go hand in hand with protecting monuments,
promoting awareness and fostering pride in J&K's rich historical and cultural legacy. As we wrap up today's episode of South Asia Today, we thank you for joining us. We'll return next week at the same time with more insights and updates. This is Akansha Parimu signing off on behalf of our entire team. Until then, stay safe and goodbye.